टॉकिंग अबाउट लाइक 9 years, कितना इम्पोर्टेंट होता है इन 9 सालों में पेशेंट रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना. For those years, yes, it was a struggle. But because there were so many other people with me who had come from the film institute, हम सबके साथ रोज ऐसा होता था कि ज़्यादातर rejections ही होती थी, you know. But I always found ways to keep myself gainfully occupied. I have performed in some stage shows. I performed in the Vagina monologues for about 9 years. Wow. I didn't feel that I was not doing anything. You being an outsider, the waiting period was probably longer because, come on, we'll be honest, there are many such star kids that we see right now making it big, and you're way much talented than them. Have you felt that? I don't know about way more talented because I feel that there are lots of actors who are very talented and some of them are also big stars, you know. It's not to say that if somebody is a big star, they're not a good actor, or if somebody is a good actor, they're not a big star. There are some people who are both and they're managing both beautifully well. Yeah. So I don't think that, I wouldn't say I'm much more talented than them, not at all. I think all हम of... बोलेंगे तो चलेगा ना. Were there any apprehensions क्योंकि स्क्रिप्ट में आपको बताया गया था कि गाली गलौज होने वाली है, there are going to be some intimate sex scenes होने वाले हैं and वगैरह वगैरह? Of course I was told, and we had long conversations and discussions such that I would be comfortable with what was happening. ये बताएं, how much did you love Beena as a character? I absolutely love her. What does she mean to you? She makes me explore a side of myself that I don't explore often. मुद्दे पर आए, कब आ रही है सीजन 3? बता ही दो अब. जल्द आ रही है. ये तो हम कोई बोल दे यार, जल्द आ रही है. मुझे भी इतना ही पता है honestly. Definitely this year and हाँ. मतलब इधर निकलने ही वाला था. मुझे सच्ची नहीं पता. कोई पल्स ला दो. कोई पल्स ला दो. Hi, I'm Rasika Dugal and you're watching me on Bollywood Hungama. She is definitely known as one of the finest actors we have in today's day and age. जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत वैसे 2007 के एक छोटे से रोल इन द फिल्म अनवर में की, लेकिन मूविंग ऑन शी हैज़ डन एवरीथिंग पॉसिबल, फ्रॉम मेजर फिल्म्स लाइक मंतो, हामिद टू OTT performances like मिर्ज़ापुर, दिल्ली क्राइम, आउट ऑफ लव एंड सो मेनी मोर. Probably the woman who can finally answer the question कि मिर्ज़ापुर 3 कब आने वाला है. Please welcome Rasika Dugal. Thank you and thank you for that introduction. How are you doing, Rasika? Very well. It's so nice to see you. It's so nice to see you ऐसे, क्योंकि हम आपको जब भी देखते हैं on screen, there's a sense of satisfaction that comes. Do you hear that often? That you know, अच्छा she's part of it, तो कुछ अच्छा ही होगा. Yes, I do. I have to admit. कितनी modest है. And it always feels special and good, no matter how many times somebody said. So please say it again. Of course, it is. It feels, but I think it also comes with a lot of responsibility there. क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट पर हैं and like we said कि अच्छा रसिका है तो मतलब कुछ अलग होगा, तो that means that होना ही है. नहीं, I mean, I don't take that pressure on myself because I feel कि as actors अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है और कुछ नया करना है तो आप किसी प्रेशर में ये डिसीजंस नहीं ले सकते. और I mean, I think every creative journey is unique and every actor has their own journey. And in that journey, there will be hits and misses. There will be a time जब आप अच्छा काम करोगे, there will be a time जब आप अच्छा काम नहीं करोगे. तो मुझे अपने आपको इतना सीरियसली नहीं लेना है कि मैं हर समय अच्छा काम करूँगी, क्योंकि then that will stop me from taking risks, stop me from experimenting with things. So it's very nice to hear this, but I don't take on any pressure because of it. But it has been a long journey, like from we're talking about 2007 and Anwar, and 2016 is where Chutney came, Yes. which was an instant hit. इतना प्यार आपको मिला. So we're talking about like 9 years. कितना इम्पोर्टेंट होता है इन 9 सालों में पेशेंट रहना, उम्मीद नहीं छोड़ना, कि you were not trying to run in the rat race. I was actually at that time, to be honest, running in every race. मतलब जहाँ से काम आ रहा था, I was trying to make it work, you know. So there was no stone that was unturned.
और I had graduated from FTI and I had moved to Bombay to look for work as an actor. Anwar, yes, was my first film. मेरी friend AD थी अनवर पे and I had come to spend the weekend with her जब मैं FTI में थी and she said आज मैं audition लेने जा रही हूँ तो मैंने बोला मैं भी आ जाऊँ because I want to see कि audition कैसे करते हैं actors, you know. So I went and I said let me also audition because I'll get practice. And then the director saw my take and really liked it, and that's how I got cast in that. And that's when I realized that anything that comes your way, you have to try to make it work because you never know कब कहाँ कॉल आ जाए और कब कहाँ आप फिट हो जाओ और कब कहाँ बात बन जाए, you know. So for those years, yes, it was a struggle, but because there were so many other people with me who had come from the film institute, हम सबके साथ रोज ऐसा होता था कि ज़्यादातर rejections ही होती थी, you know. But I always found ways to keep myself gainfully occupied. I have performed in some stage shows. I performed in the Vagina Monologues for about 9 years. Wow. I did a film with Karan Gaur, who I've done another film with, which is coming out on the 1st of March. And I had done that independent film with him. And even though that film had released in only a few theatres in Bombay, it had got a lot of recognition at film festivals, and so I didn't feel that I was not doing anything. You know, I was doing whatever came my way. I was acting, I was getting more experience, so all of that was happening. But yes, the work started popping around 2016. Do you feel that, because you being an outsider, the waiting period was probably longer? Because, come on, we'll be honest, there are many such star kids that we see right now making it big, and you're way, 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 way much talented than them. Have you felt that? I don't know about way more talented because I feel that there are lots of actors who are very talented and some of them are also big stars, you know. It's not to say that if somebody is a big star, they're not a good actor, or if somebody is a good actor, they're not a big star. There are some people who are both and they're managing both beautifully well. Yeah. So I don't think that, I wouldn't say I'm much more talented than them, not at all. I think all हम of... बोलेंगे तो चलेगा ना? वैसा नहीं है. Yes, of course, when you don't know people and you don't know who to call or who to meet or how to conduct yourself and you have no previous precedence or experience of the business, time तो लगता ही है to make connections, to make a contact with people. It takes that time, but I wouldn't, now that I look back, retrospectively, I wouldn't have it any other way because there's just so much I learned at every stage. And kyunki it was slow, by the time I had a more important role, I really knew how to do my job. Nice. If I was thrown into a lead role 1 year into coming to Bombay, I don't know if I would have been able to do it. मैंने 14 फिल्मों में छोटी-छोटी roles की थी. Anwar was the first, No Smoking with Anurag Kashyap was the second. There were so many other films. Summer of 2007, which was directed by Sohail Tatari. 14 फिल्में की थी before I got a sizable part in a film. तो सबसे छोटा रोल याद है कितने पेज का था, कितने लाइंस का था? I think Anwar, No Smoking, Summer of 2007, they were all sort of similar in terms of screen time. Last Story also, if you say. But Last Story had done much later, and that was out of a desire to work with Zoya, you know. So that was when I had actually already been cast in Manto. I was doing a lead opposite Nawaz. Chutney had already happened. And I was doing a show with TVF, Humorously Yours. So that was a very deliberate, okay, I'll take a small role because I want to work with a very talented director, you know. So that was much later. ये जो 14 फिल्में बोल रही हूँ वो पहले की बात है. This is pre-2011. Oh. So academically, you have very strong background. आपने BSc किया है in mathematics. जी. तो जैसे पेरेंट्स कहते हैं, मैं ये भी आपसे भी ऐसे ही डायलॉग में पूछना चाहूँगी कि एक्टिंग करने का भूत कैसे आया? एक्टिंग करने का भूत तो बाद में आया, ऐसे ही कुछ अलग करने का भूत शायद हमेशा था. तो I was working as an academic research assistant actually. Gender और public space पे एक बहुत ही academic project, there's this organization called पुकार Partners for Urban Knowledge Action and Research. वो लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनको एक रिसर्च असिस्टेंट की ज़रूरत थी और मैं उनके साथ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी. सो बहुत ही एकेडमिक माहौल था एंड नथिंग टू डू विथ फिल्म्स और एनीथिंग. एंड आई रियलाइज कि अगर इस करियर में आगे बढ़ने के लिए मुझे और जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी. एंड आई सेड आई एम नॉट अप फॉर दैट राइट नाउ.
So एक दिन मैंने न्यूज़पेपर खोला and I was just flipping through the pages and I saw that FTI was restarting their acting course. तो मैंने सोचा चलो अप्लाई कर लेती हूँ. FTI के बारे में बहुत सुना था कि विजडम ट्री है, उसके नीचे आप बैठो तो आपको सिनेमा के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है. तो ऐसे ही मतलब ऑन अ विम आई अप्लाइड टू FTI and I got through. बट एक बार जब मैं इंस्टीट्यूट चली गई एंड एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ तो मुझे लगा हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम रियली एंजॉयिंग दिस स्टोरी. एफटीआई आपने कहा ऐसे ही चले जाते हैं. अनवर उस की समय ना ऑडिशन लाइफ के में मैं लिए हर चीज ऐसे करती थी कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं. यू नो व्हेन यू आर यंग यू डोंट रियली केयर अबाउट ऑल दीज. इतना आप नहीं सोचते कि ये डिसीजन मेरी जिंदगी को बदल देता. मैं नहीं सोचती थी. आई नो अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर वेरी फोकस्ड. आई वाजंट दैट फोकस्ड पर्सन. आई वाज जस्ट लाइक चलो दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये कर लेती हूँ. अच्छा दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये भी कर लेती हूँ. क्या अभी ये कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है या नहीं नहीं पता, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है. हाँ, दैट आई विल एडमिट कि यू कांट बी एज केयर फ्री एज एंड एज बिंदास एज यू यूज्ड टू बी इन योर अर्ली 20s. यू नो यू डू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ थिंग्स बिकॉज वंस यू अचीव्ड समथिंग यू वैल्यू इट एंड यू फील लाइक दोबारा आपके साथ ऐसा ही हो, या तो आप उसको मेंटेन करें या आप उसको बेटर करें. तो ये ख्याल तो आई हैव टू ऑनेस्टली एडमिट कि आता है. लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वो ख्याल मेरे डिसीजन का हिस्सा ना बने, कि आई एम स्टिल एबल टू टेक माई डिसीजन बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग, नॉट बिकॉज समथिंग हैज़ इन दैट हैज़ इंटरेस्टेड मी. एंड इवन इफ इट मीन्स कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाइज मेरे लिए लॉस हो, आई एम एबल टू टेक दैट डिसीजन. You know, I'm still able to take that. अरे लगता है इसमें मजा आएगा, चलो कर लेते हैं डिसीजन. अच्छी बात है that you know that innocence is still there. Means I try. Yeah, it doesn't Yeah. come as easily as it used to come before, but I Correct, try. correct. But all those thoughts are also there कि अरे नहीं कुछ जिसकी ज़्यादा व्यूअरशिप हो या जिसकी ज़्यादा ऑडियंस हो वो ज़्यादा करें. You know वो ख्याल आते हैं, but I hope that it doesn't become a part of my decisions. You're a face that everyone when sees for the first time says अरे इनको कहीं देखा है पक्का इन्हें, probably because of the films that you have done. Like आपने कहा कि 14 फिल्मों में कहीं ना कहीं आप नजर आई हैं. My earliest memory I would say is when I saw you in Humorously Yours and I loved it. मतलब एक सीन है जहाँ पर आप विपुल को एक बहुत बढ़िया कमबैक देती है that you know he says that मैं क्रिएटिव इंसान हूँ तुम नहीं समझोगी, and you say that you know oh really you know who pays for your creative shows is the people who are behind finances. And that was such an epic show in itself. Yeah. But when do you remember you started getting recognition? लोग आकर आपसे फोटोज या फिर ऑटोग्राफ्स लेने लग गए थे. याद है आपको कब हुआ ये? I think definitely majorly after Mirzapur, but a little before that with Chutney and Manto also. But mostly after Mirzapur. So let's dig in directly into the character of Beena. ये ऐसी भाभी with different shades that she has shown. Would you agree that Mirzapur is the Indian version of Game of Thrones? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं. I would love to answer the question, but I think I must be one of those 3 people in the world who hasn't watched Game of Thrones. Just so that the audience creates this expression, I'm going to do what? बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता. And I'm going to say yes. No pressure. बहुत लोग प्रेशर में देखते. मैंने प्रेशर में देखा था गेम ऑफ थ्रोन्स बिकॉज आई फेल्ट लाइक यू नो सब बात कर रहे हैं, कोई बात मैं नहीं बात कर पा रही हूँ. नहीं, I also felt totally like that. I felt very left out and there were many conversations जिसके बारे में I mean I was totally out of it and लोग बातें किए जा रहे हैं और मैं उनको बैठ के देख रही हूँ कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. बट उन दिनों मेरे पास वक्त ही नहीं था देखने का, कि I was already so many seasons behind कि मुझे कुछ 2-3 महीने लग जाते कि मैं बैठ के सिर्फ घर पे गेम ऑफ थ्रोन्स देखूं. बट मुकुल at one point had gotten, Mukul my husband had gotten really hooked to it at one point, and I remember he would watch it at 9 o'clock in the morning because it had released in America at that time, and he didn't want to find spoilers online, you know. So
So yeah, he would do that, and so when he was so hooked to it, I thought maybe now I should get into it, but that time I didn't have the time, तो रह गया. But हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये comparison किया किया है. है. I don't know how far it's true or not true, but Game of Thrones is also a very well made show, so I would take that as a compliment. Absolutely. So how did you get the role of Beena? Actually, that is an interesting story which ties in well to the idea कि don't leave any stone unturned. कि जहाँ कोई मौका मिले, आपको लगे कि कोई कुछ बना रहा है और आपको झिझक हो रही है फ़ोन उठाने में और पूछने में, this is that example कि you should pick up the phone and make that call. So there was a friend of mine at that time who told me that Karan Anshuman is making a show with Excel Entertainment. So I said, I know Karan, and Karan used to be a film critic. He had reviewed Che and some other work that I had done. And socially, here and there, I had sort of met him. And I said, Karan knows me. If there's anything for me, he'll call me. Huh. So my friend said, no, you have to remind people. You message him or you call him. So I said, no यार अच्छा नहीं लगता, you know, वो awkward हो जाएगा आगे वाला इंसान कि अगर मेरे लिए कोई रोल नहीं है या वो मुझे कास्ट नहीं करना चाहे तो then I'll put him in an odd spot. So he said, that's his problem. You make the call. So I said, okay. So I called Karan. I messaged Karan and I said, listen, I heard you're making this show and if there's anything for me, please let me know. So Karan messaged back immediately almost to say that, yes, can we meet tomorrow? And I remember I was going to Cannes at that time for Manto. And I went to meet him and I said, so he said, listen, I thought you're doing Manto and you're doing a female lead opposite Nawaz, so you wouldn't be interested in a web show because that time this was still new. I said, are you mad? If it's a great part, I'll be. He said, I'm so glad you messaged. So he said, there's this part which I don't think you totally fit into, but we would like to see you in that. So will you do an audition? I said, of course I'll do an audition. So I did an audition and I thought my audition was very bad. मैं घर वापस आई और मैंने अभिषेक बैनर्जी को फ़ोन किया. अभिषेक बैनर्जी ने मेरा ऑडिशन लिया था. कास्टिंग डे वाज ऑडिशनिंग और मैंने बोला यार मेरा ऑडिशन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है. एंड आई वर्कड विद अभिषेक इन ह्यूमरसली ऑज एंड I've known him. The obnoxious friend. So मैंने बोला अभिषेक मेरा ऑडिशन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, क्या मैं दोबारा आके ऑडिशन कर सकती हूँ? He said मैं देख के बताता हूँ. And then a few days later he messaged me. He's saying बहुत अच्छा ऑडिशन है, don't worry about it. I said, are you sure? You know, I can do better. And then I went back home and I said, ये लाइन मैं ऐसे बोल देती, ये लाइन ऐसे बोल देती तो मेरा हो जाता. And obviously people take time to get back to you, you know. But I think it took about 10-12 days and they got back to me saying that you have the part. ये क्या कहानी है? मैं सोच रही हूँ ऐसे कितनी बार हम में से कितने लोग सोचते हैं कि यार वो कॉल करे ना करे. ऑकवर्ड वाली बात हमेशा हो जाती है. आई लव्ड द एडवाइस गिवन टू यू कि वो उनकी प्रॉब्लम है, आप कॉल कर लो. आप कॉल कर. ऐसे कितने हमने मौके खो दिए होंगे. या इनफैक्ट आई रिमेंबर दिस स्टोरी एंड यू नो कोई चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में बाद में इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जी. आप फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न यू रिमेंबर समथिंग अबाउट इट फ्रॉम अर्लियर. Years before I became an actor, I had attended a lecture by Mansoor Khan. And he had told me that he was looking for a girl. He had said in that lecture that he was looking for a girl for Jo Jeeta Ve Sikandar. And long back, Aisha Julka had come to audition for it. And he hadn't remembered her. But then she called to check if she'd got the part. And he said, then I remembered that there was this girl. So I don't know Aisha Julka personally at all, and nor do I know Mansoor Khan. But this story just stuck in my head. And this was not even when I was an actor. This was before I became an actor. So that story stuck in my head. So sometimes when I feel ki, you know, maybe I should just call, I do it. Make that call. Make that call, guys. Oh my God, this is amazing. Were there any apprehensions? क्योंकि स्क्रिप्ट में आपको बताया गया था कि गाली गलौज होने वाली है, there are going to be some intimate sex scenes होने वाले हैं and वगैरह वगैरह. Of course I was told, and we had long conversations and discussions such that I would be comfortable with what was happening. And in detail, Karan and Gurmeet, who directed season 1, and Gurmeet subsequently directed 2 and 3, and is a lovely director. We had detailed conversations कि हर scene में क्या कैसे shoot होगा और closed set होगा. In fact, I had so much control that they even asked me कि tell us if you feel uncomfortable with anybody in the room, we'll ask them to leave. You know, so that was the kind of openness and the kind of sensitivity with which the scenes were shot.
But abhi I'm very glad that the concept of intimacy directors is Yeah. here. And in the show that I did recently, there was a lovely intimacy director who was there, and so that just makes things more structured, more directed. क्योंकि मिर्ज़ापुर में everybody was so sensitive and kind to me, but हो सकता है कि ऐसा कोई और set हो जिसमें लोगों को required sensitivity ना हो. Sure. So I think the concept of intimacy directors is very good, and I think people should hire intimacy directors Rasika, can you for scenes take like us that. through what does the director do on the sets so that people who are watching just gets an idea कि exactly किस तरीके से उनकी मदद मिलती है ऐसे scenes में? Intimacy directors की. So I worked with Neha for the first time in a show that I did with Applause recently, and we workshopped before. Okay. So and there are some basic exercises that you do which make you comfortable with the other person's touch, but in a way that it's directed, that nobody is violating the other person's boundaries, you Right. know. And and also through the workshop you were made aware of what is a comfortable touch for the other person and what is not. So you knew that these areas are something that they don't feel comfortable with, but there are other things that you can comfortably do which does not violate them in any way, and all of that. And also we sort of, it also helps you find a rhythm and and a way to sort of choreograph a scene such that nobody feels uncomfortable in any That's way on the day great. of shoot. That's wonderful. Because कई बार shoot के दिनों में अगर कोई आपसे आके पूछे are you okay with this, you want to say yes even though you're actually not, because you don't want to be the person saying I have a problem. Yeah. You know, and very often that's not the best thing to happen. Correct. You know, and I'm very glad that all this happens in a workshop space which is safe, where everybody's not stressed and we are all Yeah. not sort of you know, dying to meet a deadline. So there's calm, so good. and you can find a You've rhythm. come a long way. I would Yes, say. You've yes, come a long way. yes. अच्छा ये बताएं, how much did you love Beena as a character? I absolutely love her. What does she mean to you? She makes me explore a side of myself that I don't explore often. And you know, कई बार आप लोगों को देखते हो लाइफ में and आपको लगता है this person is so beautiful, you know, and you're like, I wish I was like this. And you can't really understand what about them attracts you. Yeah. Beena is that. There's something about her. She's not drop dead gorgeous. It's not कि आप बीना को देखोगे बोलोगे आए कितनी ऐसा नहीं है, but there's something about it वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, और subtly. She's not trying too hard. Yeah. And I love that body language. I love people who are like that, you know, who are just like, they're sitting with themselves. They're so comfortable with themselves that you feel attracted to them. Beena is that. She doesn't feel she needs anybody. Yeah. You know, she manages on her own, and she has this lovely body language, which is like she's owning every bit of herself. You know, so I love that. I love women who have that, and I've always looked at women like that and said, "अरे, वो लचक अगर मुझ में भी होती." क्या खूबसूरत बात कह दी. So Mirzapur also, like, you know, since I started the interview by saying that you definitely are one of the top actresses that we have right now in our industry. Mirzapur also gave us Pankaj Tripathi in the limelight. How was it working with him? आउटस्टैंडिंग. पंकज ना इतने मज़ेदार एक्टर हैं, इतने रिलैक्स्ड एक्टर हैं. ही डजंट टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली and he doesn't seem to take his work too seriously, but he does such a good job every time that I'm sure he does take it seriously. लेकिन वो कभी ऐसे नहीं लगेगा आपको कि वो किसी बहुत प्रिपरेशन में है. वो बहुत आराम से आकर बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, यू नो. एंड पंकज की हर लाइन में, हर डिलीवरी में ह्यूमर मौजूद होता है. हाँ, वो कैसे करते हैं आई डोंट नो. ही सच अ, आई थिंक ही सच अ likable person, and he's such a good human being that is always there. You know, there's something so likable about him. And he notices small things. Like I remember season 2 में, I don't know if you know, I don't know if you remember, but एक scene है जहाँ पंकज और ईशा, अखंडानंद ईशा के कैरेक्टर से बात कर रहा होता है,
and Beena बैठी है and she's pregnant, huh? So she's feeling a little left out of this conversation also. She just wants to make her presence felt. Yeah. Huh? Now all this was not pre-decided. All this just happened on the day. एक टॉफ़ी है पल्स, हाँ, जो मैं उन दिनों खाया कर रही थी because I was traveling in the hills a lot. So वो मेरे पास था, तो मैंने उसको सीन में यूज़ कर लिया, हाँ, कि वो ज़ोर ज़ोर से चूस रही है उस टॉफ़ी को, क्या आवाज़ आती है ना जब लोग टॉफ़ी चूसें, ताकि शी इज़ मेकिंग हर प्रेजेंस फेल्ट इन दैट सीन, हाँ. सो पंकज ने वो देख लिया, नोटिस कर लिया. मैं तो ऐसे ही मज़े में कर रही थी कि मेरी लाइनें भी नहीं है, सारी लाइनें इन दोनों की हैं. मैं बैठी हूँ बिस्तर में एंड रीना इज़ प्रेग्नेंट, सो शी सिटिंग 2 पिलोज में अपने आप को टिका कर बैठी हुई है और ये लोग लाइनें बोल रहे हैं और मैं बैठ के so Pankaj saw that. वो सीन खत्म होता है and then we have a little conversation. So he looks at me and he says, क्या बिन्नी? और पहली बार उन्होंने मुझे बिन्नी बुलाया था. So he really knows, you know, he notices things, he picks up on things and he builds on things, and that is a great co-actor to have. तो अब मुद्दे पर आए, कब आ रही है सीजन 3 बता ही दो अब. Just tell us यार. जल्द आ रही है. ये तो हम कोई बोल दे यार जल्द आ रही है. मुझे भी इतना ही पता है ऑनेस्टली, बट मुझे ये पता है कि हमारा काम कंप्लीट है. हाँ. और हमारा काम, मेरे ख्याल से हम सब का काम बहुत अच्छे से हुआ है. तो सून एंड डेफिनेटली दिस ईयर एंड हाँ. मतलब इधर निकलने ही वाला था. मुझे सच्ची नहीं पता. कोई पल्स ला दो. कोई पल्स ला दो. Another really epic drama that we remember you for is Delhi Crime. And now Delhi Crime had you to play, you know, that junior constable who had to have a body language in a certain way. And जिस तरीके से आप मैडम सर शेफाली शाह को बुलाती है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग एंजॉयबल था ये किरदार? एक्चुअली ये किरदार मेरे लिए आसान था, आई वुड से, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से मिलती जुलती है. My body language is naturally a little shy, a little quiet, a little small. Like my gestures would be small. I don't have big, confident gestures. They're usually, you know, ऐसे वाले. So कई लोगों का ऐसा होता है, कई लोगों के gestures ऐसे होते हैं. मेरा वैसा वाला है. So नीति सिंह, I felt very connected to the moment I read the script. मुझे लगा she's जैसे मैं कॉलेज के दिनों में थी ना, आइडियलिस्टिक, सिंसियर, मुझे लगता था कि हार्ड वर्क से दुनिया बदल जाएगी, तो वो सब चीज़ें नीति सिंह के बारे में हैं. सो आई फेल्ट लाइक शी रिमाइंडेड मी ऑफ माई सेल्फ इन द कॉलेज डेज. सो वो रोल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरे दिल के सबसे करीब है, आई थिंक. एंड आई लाइक द आइडिया दैट I like playing नीति सिंह because I feel कि you know, कई बार लोग सोचते हैं कि जो औरतें, ख़ासकर औरतों के बारे में सोचते हैं कि जो लोग सॉफ्टली बात करते हैं या अपने आप को असर्ट नहीं करते, वो वीक हैं. करेक्ट. और औरतों के बारे में तो जनरली लोग यही मानते हैं. बट आई वांटेड टू प्ले नीति सिंह इन अ वे दैट या शी इज़ सॉफ्ट एंड शी हैज़ अ वेरी सॉफ्ट साइड टू इट, बट शी इज़ a very strong woman and she really takes some very difficult decisions in very difficult circumstances. Yeah. So she holds her own, you know, in spite of not having that kind of body language. So that I thought was important. I thought that the chemistry between you and Shefali Shah was just something that we want to have with our seniors. I'm sure everyone would want to share that क्योंकि everything was there. Like जब गुस्सा करना था तो गुस्सा भी करती है, जब प्यार से समझाना था तो प्यार से समझाती है and all. So in fact that also came easy because I was so in awe of Shefali's work anyway that wide-eyedness came very naturally also. Did you enjoy then calling her Madam Sir, Madam Sir? I love calling her Madam Sir. I think that's just stuck and it's become a takya kalam of the character almost, you know. So I like that. Rasika, in all the various roles that you have experimented, मैं ये नहीं कहूँगी जिसमें आपने काम किया, because सच्ची में आपने हर एक किरदार को ऐसे निभाया जैसे that you couldn't be replaced. Do you have a favorite? Something that's extremely close to your heart? I think Neeti Singh. Yeah, I actually really like her. I'm very fond of that character, I would say. And I shadowed a police officer for Delhi Crime 1. Okay. Who was in the same position as Neeti Singh is in season 1.
and I called her when we were prepping for season 2 and I said मैं आपसे आके दोबारा मिलना चाहती हूँ. She said हाँ ज़रूर आओ क्योंकि आपने ना बहुत सारी गलतियाँ की थी. ठीक से सल्यूट नहीं किया, पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज एकदम कॉन्फिडेंट होती है, आपने अच्छे से नहीं किया. ठीक है मैं आ रही हूँ वापस अभी आपके पास. So then I went and sat in her office for 4-5 days. पुलिस वाले से डांट पड़ गई अच्छे से नहीं किया. So and I really enjoy that experience of going and being a fly on the wall of somebody whose life you are not otherwise I would not have been privy to. मतलब एक दिन में एक पुलिस ऑफिसर को कितनी अलग अलग चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है. मतलब सुबह कोई 2 नेबर्स आ जाते हैं उनके ऑफिस में, कहते हैं उसने कचरा इधर डाल दिया, मुझे FIR डालना है उसके अगेंस्ट. ऐसा हो जाता है. मतलब समथिंग सो ट्रिवियल तो शी इज एंडिंग हर डे विद अ मर्डर इंटेरोगेशन. मतलब एक दिन में आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं. सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग एंड ऑल्सो सैड. बट एट द एंड इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने का एक सुनहरा सा फील आ जाता है. नाउ I'd like to talk to you about this quite recent project that you and your husband Mukul are a part of called Fairy Folk. सबसे पहले हस्बैंड के साथ काम करने की एक अच्छी बात और एक बुरी बात बता दो. अच्छी बात कि ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बच गए. That's the good part. मुकुल, are you listening? ये खर्चे बच गए. एंड बुरी बात कि घर पे कोई था नहीं कि वो डिसाइड कर पाए कि खाना क्या बनाए. नो बट सीरियसली अच्छी बात थी कि एक ऐसे इंसान के साथ आप काम कर रहे हैं जिसके साथ ऑलरेडी एक वर्किंग रिदम है. और ये वर्किंग रिदम कपल होने की वजह से शायद उतना नहीं हो जितना क्योंकि हमने इम्प्रोव एक साथ किया था. एंड दिस वाज एन इम्प्रोवाइज्ड फिल्म. तो एज यू नो बिकॉज यू ऑल्सो डन सम इम्प्रोव कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्रोवाइज विद पीपल हु डोंट नो द बेसिक रूल्स ऑफ इम्प्रोव. So I had worked with in improv comedy Mumbai, but I was a guest member. I would sometimes come and sometimes leave. Mukul, of course, has done a lot more improv than I have, and so to have a co-actor to play off who really knows how to improvise, and I felt always जब मैं improv करती हूँ कि मेरा yes and basic rule है improv का कि जो भी आपका को एक्टर आपको दे आप उसको रिसीव करें, आप ना बोलें और उस पर बिल्ड भी करें. सो आई वुड ऑलवेज फाइंड द येस ईजी, आई वुड फाइंड द एंड डिफिकल्ट बिकॉज आई वुड नॉट नो कि अब इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. यू नो मुकुल इज वेरी गुड एट दैट. सो आई वॉज एट पीस कि अगर मैं वहाँ अटक जाऊंगी वो मेरी मदद कर देगा. यू नो सो दैट वाज द गुड. इज दैट हाउ यू ऑल मेट आल्सो? We met not at Improv Comedy Mumbai, but we met at a theatre workshop years before that. Achha. But it was an improv workshop, and it was a very bad workshop. Sunday सुबह को workshop थी प्रभा देवी में और सब actors आधे सोए हुए थे. Are you seeing the pattern in your life? बहुत बुरा मेरा ऑडिशन था, मिल गया. बहुत खराब वर्कशॉप था, शादी हो गई. आई थिंक इसलिए हुई क्योंकि जब अच्छा वर्कशॉप होता है तो इतनी बातें करने को नहीं मिलती. ये इंटरव्यू आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है. हाँ तो जब बुरा वर्कशॉप चल रहा होता है ना तो बहुत बातें होती हैं. करेक्ट. जब 2 एक्टर्स किसी बुरे वर्कशॉप में मिल जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती है कि अरे ये अच्छा नहीं हो रहा, ये ऐसे कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे. तो वैसे ही हमारी मुलाकात हुई एंड वी वर सिटिंग एट लंच एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन दिस वर्कशॉप एंड देन वी बिकेम फ्रेंड्स. एंड amazing. Tell us a little bit about this film and tell us why is it so important that there was a tag written after the short teaser जो हमने देखा that only in cinemas. I think we are very proud that a film which is as different as ours in so many ways. I think first it's an improvised film. I don't think I have not seen an intentionally improvised film come out of our content before, and because of its improvisational quality, I think the dialogues are very funny and they're very very new and refreshing. Because कई बार I think अच्छे dialogues लिखने के चक्कर में या तो हम चीज़ों को बहुत ही logical बना देते हैं और उनकी जो
ऑडिटीज़ होती हैं, जो जो गलतियां हम लाइफ में करते हैं बात करते वक्त, वो निकल जाती हैं। बहुत साफ सुथरी लाइनें और बहुत सीधे सीधे थॉट्स। और जब हम जिंदगी में बात करते हैं तो वी स्टार्ट विद वन थॉट, वी लीव दैट, दूसरे थॉट पर चले जाते हैं, फिर इस थॉट पर वापस आते हैं. सो द डायलॉग हैज़ दैट ब्यूटिफुल क्वालिटी एंड आई थिंक दैट्स व्हाट स्टूड आउट टू मी अबाउट द फिल्म. ऑल्सो इट्स अ मैजिक realism in a relationship drama. So कुछ चीज़ें बहुत रियल भी हैं और कुछ चीज़ें जो बहुत अजीब भी हैं, बिल्कुल फैंटास्टिकल हैं. तो एक फैंटास्टिकल वुडलैंड क्रीचर एक कपल की लाइफ में आ जाता है एंड हाउ दैट कपल इज़ देन फोर्स्ड टू री एग्जामिन देयर ओन लाइफ एंड देयर ओन रिलेशनशिप. सो जब ऐसी थीम्स होती हैं, आई थिंक वी आर ऑल प्राउड दैट it is getting a theatrical release. And audiences will get to watch something different. And also I feel कि there are some films जो आप privately देखो तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा ह्यूमर होता है कि आप दूसरों के साथ enjoy करो तो आपका मज़ा दुगना हो जाता है. I think this is one of those films. So community viewing is good. So I'm happy that it's releasing in the theaters. I must say that the teaser या फिर जो trailer आया है, let me use the word, it's very distracting and people who will watch it will know why. That is the fantastical creature. That is the magic realism part. Left and right में real है, बीच में magic है. कई बार आपको ये पूछा गया होगा कि that जब दो एक्टर्स शादी करते हैं तो घर पर माहौल कैसा रहता है. मैं पूछना भी चाहूँगी और शायद इसका जवाब हमें पता है क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी ऑल्सो सॉ बनाना ब्रेड. तो दो एक्टर्स मिलकर एक्टिंग कर लेते हैं लॉकडाउन में. उन दिनों तो हमें लगा कि अगर दो एक्टर्स एक घर पे रह रहे हैं और हम फिल्म ना बनाए तो ज्यादती हो जाएगी. क्योंकि मतलब आपके घर में ही को एक्टर मौजूद है तो आप काम कर सकते हो और बाकी सब जगह तो काम रुका हुआ है. सो इट वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस आइडिया दैट हाउ कैन वी वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग लॉक्ड अप इन अ हाउस टुगेदर. वी मस्ट be productive in some way. So that was the genesis, I think, of Banana Bread. But sorry, you were asking something else. So how is it living with an actor, like you know, having your husband, your wife, an actor? I totally enjoy it because Mukul is like my sounding board at the end of every shooting day. कि मैं शूट करके आती हूँ और मैं उसको सारी डिटेल्स बताती हूँ कि आज ये हुआ और मैंने सोचा था मैं ऐसे करूँगी लेकिन ऐसा हो गया और इसको मैं बेटर कर सकती थी. एंड आई डू माई लाइन्स अ लॉट. लाइक आई रियली मतलब अगर आप मेरे साथ बैठे हो और मैं अपनी लाइनें कर रही हूँ तो आप बहुत बोर हो जाओगे क्योंकि मैं बार बार दोहराती रहती हूँ लाइन्स को. तो मुकुल कभी कभी मेरे साथ लाइन्स भी करता है बिफोर द नाइट बिफोर शूट. तो कालीन भैया की लाइन उन्होंने की है, उसको सारी याद है. कालीन भैया की सारी याद है. आप मुकुल से पूछो, मुझे कुछ याद नहीं है, उसको सारी याद है. और एक बार तो मैं स्क्रीनिंग में बैठी थी, मुझे याद नहीं कौन सा प्रोजेक्ट था और मुकुल मेरे बगल में बैठा था और जो लाइन आने वाली थी आई ऑलरेडी हर्ड मुकुल बड़बड़ाइंग दैट लाइन. ही रिमेम्बर्ड इट फ्रॉम द टाइम दैट आई हैड डन लाइन्स विथ हिम बिफोर शूट. टू स्वीट. अच्छा, इम्पोर्टेंट भी कुछ दिन आने वाले हैं बिकॉज फेरी फोक के साथ साथ सनफ्लावर इज आल्सो कमिंग सीजन 2. Yes. एंड मुकुल he has 2 premieres on one day. One theatrical and one web show. Wow. How much did you enjoy the first season of Sunflower? I totally enjoyed it. I think could you relate to Mukul's character? To Mukul's character, I was very proud that he managed the Hindi very well. क्योंकि उसकी हिंदी इतनी साफ नहीं है नॉर्मली लाइफ में. क्या कह रहे हैं आप? और वो तो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आहूजा, डॉक्टर आहूजा, क्योंकि उनका डबल PhD है. तो वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात करते हैं. तो आई थिंक ही पुल्ड इट ऑफ वेरी वेल. Hi, I'm Rasika Dugal and you're watching me on Bollywood Hungama.